What is abstraction? Abstraction is nothing but to hide implementation details for the user and to show only essential details. ठीक है, मतलब कि यूजर्स को हमें उसके इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में नहीं बताना, हमें केवल बताना है what are the essential, what are the functionality details, what are the functional, how that works. मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूँ, जैसे यू आर ड्राइविंग अ कार और यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन. ओके, सो let's whenever you swipe up, then your phone received, right? There is an instruction how to receive the call, but have you ever thought, क्या आपने सोचा है कि रिसीव करने से, मतलब स्वाइप अप या जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वैसा करने से रिसीव कैसे हो जाता है, आखिर अंदर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे है उसमें, आपने कभी ये जानने का सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, राइट? दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एवरीबडी. वो डेवलपर जानता है कि अगर ये इंस्ट्रक्शन मिलता है तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, राइट? सो एब्स्ट्रैक्शन इज़ ओनली दैट थिंग्स, मीन्स इट इज़ ऑन द डिज़ाइन लेवल. ठीक है, कि इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको केवल उसके यूज़र इंटरफेस और उसके फंक्शनल डिटेल्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा और आपको जस्ट उसको एक्सेस करना है. ठीक है, जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो, व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग द कार, हाउ इट एक्सेलरेटेड आपको नहीं पता, राइट? उसके बारे में आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, राइट? तो व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड व्हाट आर द एसेंशियल डिटेल्स, एब्स्ट्रैक्शन उसी के बारे में डिस्टिंग्विश करने का चीज़ है. Abstraction is designed on the design level only, not on the implementation level. It hides the implementation. Okay. So now the next question will come: how we can achieve abstraction, right? We know that abstraction is nothing but to hide the implementations and show the essential details only. Okay. So how we can achieve that abstractions? So Java provides an abstract class. Okay, using abstract class we can achieve abstraction. ठीक है, so abstract class कैसे हम लोग create करेंगे? So for that there is a keyword called abstract. Okay, so to create any class abstract we must have to give that abstract keyword. Okay, so the syntax of creating abstract class will be abstract class name. So first we will give abstract keyword, then class name. Okay, so this way we can create an abstract class. Now if there is abstract class, then there will be abstract method. Okay, abstract method means what? The method which do not have the body. Okay, there is no definition of that method, so that method is only declared. So abstract method is also declared with abstract keyword. Whenever you are creating any method, so before creating any method, if you give their abstract keyword, so that method will be treated as abstract method. So for that method you do not have to define any body. Body means inside the curly braces. You do not have to give that curly braces opening and closing. You just have to give the semicolon after the declaration. Okay, so abstract method is nothing but a method that is declared without implementation. So that I told you that you have to just declare a method and without curly braces just put semicolon there, so that will be abstract method. Okay, so abstraction is nothing but to hide the implementations and to show only the essential details that is required to the user. Okay, so this is the example, abstract class area. So here in the red I have marked like how you can create an abstract class. So this is the example, abstract keyword, class, then class name. Okay, and to create abstract method, again I have given the abstract double area. Double is a return type, abstract is a keyword, and area is the method name, and I have not given any curly braces, and I just give like semicolon. Okay, so now this is abstract method.